how this acting career happened to you? कि आपके family में से कुछ background था इसका? Just tell me how it happened. I probably, if today I'm an actor, if not an actor, I would have gotten into defense services. I was always very, very keen, to get into defense services. I would have been an army officer or probably a navy or, air wing officer. And I'm ex-NCC cadet. I was the senior under officer. And अगर आप इंडिया में कोई भी इंसान अगर डिफेंस में जाना चाहता है Exam. तो उसको एक एग्जामिनेशन देनी yeah. होती है, CDSE, कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन. आई रोट दैट एग्जामिनेशन. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई एक्चुअली वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई कुडंट क्लियर इट. एंड एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार गई, दूसरी बार भी आई कुडंट क्लियर इट. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज नॉट वर्किंग, लाइक क्या हो रहा है, क्यों नहीं वर्क हो रहा है. मैं हमेशा राइटिंग वाला एग्जामिनेशन पास कर देती हूँ बट इंटरव्यू, और ऐसा नहीं है दैट आई लैक कम्युनिकेशन स्किल्स और आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बट इट वॉजंट क्रैकिंग. And then I was a little this thing ki yaar kya, it's not working out. And one day I see an article in a newspaper saying that there's this competition happening, Mr. and Miss Rajasthan. And I was like, theek hai. And the requirement was for girls 5'6" and above, and I'm 5'7" tall. So I was like, theek hai, let me give it a try. And I went for that, and I did not win the competition, but I won best hair and best smile. And I think from there, वो थोड़ा it kicked in. कि अच्छा, One this thing is led to something, another. this is something I would like to do. And probably I can think of it as a profession. And this can be or might be my bread and butter. And like, that's how it eventually, dhire started. So then coming to Mumbai, how did you come to Mumbai? So see, I started working as a model, and dhire dhire I realized that modeling is a short-term career. And I mean, I don't know whether I should call it a short-term career or not, but then मुझे ऐसा लगा मेरे experience से, like lot of people might not agree to what I'm saying, but मुझे मेरे experience से ऐसा लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा है short-term career, and आप इसको मेन ब्रेड एंड बटर नहीं बना सकते. एक होता है ना, एक आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम होता है. सो दिस कांट बी माई मेन सोर्स ऑफ इनकम. एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आफ्टर अ पॉइंट मैं क्या करूँ. आई वॉज फीलिंग अ लिटिल स्टक कि इसके बाद क्या, इसके आगे क्या. And that's how I got into acting. I started doing theatre back in my hometown. I'm born and brought up in Jaipur, Rajasthan. And I started doing theatre there. There is JKK. वहाँ पे रविंद्र मंच है, हम लोग वहाँ पे बहुत परफॉर्म करते थे. इनफैक्ट हमने एक प्ले किया था जिसके लिए हम पाकिस्तान गए थे. वी वेंट टू लाहौर, वी वेंट टू कराची, एंड so When was this? This must be before the problems between India and Pakistan happened. Yeah, almost 8.5, 9 years back. And उस प्ले का नाम था मिडसमर नाइट्स ड्रीम. शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका हमने हिंदी और राजस्थानी रूपांतरण किया था. तो उसका नाम था कसुमल सपनों. सो वी परफॉर्म देयर, वी परफॉर्म्ड इन लाहौर, वी परफॉर्म्ड इन कराची, वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. And from there onwards, I started taking acting a little more seriously. And then one day I told my father that I want to go to Mumbai, I want to become an actor. And he was like, what? Really? I'm like, yeah, I want to get into acting. And see, any which way I was a professional model. ठीक है, I was earning as a model. And वो करते करते भी 2-2.5-3 साल हो गए थे. And touchwood, I was pretty successful in it.